Everyone. My name is Ikshit Sethi and I am a 100% merit scholarship awardee at Modern Delhi International School, Set 89, Faridabad, Haryana. Last year, in the academic session of 2025 to 2026, I received the 1000 ship or 100% scholarship award at MDIS 89 for my 11th and 12th studies in the PCM stream. On this video, I will be primarily trying to tell you things that I wish I knew during my preparation and learnings that I had while preparing for this specific examination that brought the scholarship that I really wanted to have. So, MDIS conducts an examination for its grade 10 students to award them scholarship for the higher studies in 11th and 12th. This exam is called the entrance exam. It occurs two times in the 10th grade. Both of them are after the month of August. First is generally in the first week of September, and the other follows a month after in October. So, there is a lot that you have to prepare for the paper. Why? Because the difficulty and the course is both different from what you are currently studying in your current class. So मेहनत लगती है, like you have to go out and beyond if you want to actually get something from this exam. um, Modern Day International School offers a lot of scholarships, and all of them are meritoriously awarded to the students on basis of their performance in this exam. So everyone writes the same exam. Everyone sees the marks they get, how they lost their marks, where they lost their marks, and accordingly, a rank list is made from which the scholarship students are decided. So I'll just first show the scholarships that MDIS offers. It is from free ship that was discontinued the year I gave the exam. Then is the 1000 ship. That means the full academic fees is waived and the transport fee is only 3000 per quarter. That comes out to about 12,000 annually. And it goes about to about 20% scholarship. That was the bottommost scholarship that was awarded this year, and in that you get 20% of your tuition fees in the exam, sorry, for your 11th and 12th studies. So there are a lot of scholarships that are offered. If I tell you what the exact data was, I was at 177.5 marks last year and got the 1000 ship award, and the scholarships went below rank 30 even. So all the students that are preparing for a certain stream write the same exam. uh, the exam is mainly structured about syllabus from the entirety of ninth and the few covered chapters of 10th. However, the syllabus is not adequately explaining the amount of effort you have to put in towards the syllabus you already know. नाइन्थ का सिलेबस देते लगता है कि आता है, लास्ट ईयर ही पढ़ा है, वी हैव क्लियर्ड आवर फाइनल्स, वी आर वेल वर्स्ड इन दैट. But even if the entire paper comes from the concepts of ninth, you are most probably not going to be able to do it at first glance, because the type of questions is significantly more conceptual than what you were exposed to during your ninth exam preparations. Other ninth में आपने properly preparation करी थी, you were doing the hot sessions, you were practicing your assignments regularly, you were following reference both, or you were in a specific coaching institute that allowed you to prepare higher than what is generally offered. Or the best of all, if you were in extra class, MDIS has extra classes and they are genuinely the best. They expose you to a level of content that actually helps you more than you even think that well. I am in 11th right now. I have been helped so much by extra class. I cannot emphasize that enough. So if you're in extra class, you already know that on this same syllabus, how different scaling of difficulty can be provided. मुश्किल क्वेश्चन भी बन सकते हैं हमारे बहुत आसान टॉपिक से, एंड वो मुश्किल क्वेश्चन करना आना चाहिए. You are only done with the topic if you are able to do any question that comes out of it. And given that they don't ask something absurd, which the school does not. The school gives a very good level paper, and it is
doable. The entire paper is solvable with enough practice and effort that you put before the exam. I'll keep this video short, so I'll quickly go over the main points of the exam. Then I'll put in any tips that I have to give, what you can do for preparing for the examination. And this is mainly made for my juniors to be able to have a path that they can follow in order to have at least some guidance on how to get scholarship in this specific paper. So the paper is of 200 marks. It is 120 marks objective and 80 marks subjective paper. The subjective paper has to be attempted in the question paper booklet itself. जो question paper की booklet मिलती है उसमें ही जगह होती है. We have to write there itself. The paper marked in this +2 for correct, -half for incorrect per question, and 0 marks obviously for unattempted questions. There is no narrative marking in the subjective section. So in the 20 MCQs that come of each subject, the first 15 questions have an answer, normal MCQ, single threat MCQ type. The 16 to 18 question are having the paragraph at top, and the question number 19 and 20 are numerical integer questions. All of these 20 questions, regardless of their type, have negative marking. So paper have to be solved in the question paper itself. क्वेश्चन थे साइड में जगह है, क्वेश्चन थे पेज पे थोड़ी सी मार्जिन छोटी हुई है, वहीं पे पेपर तो सॉल्व करना होता है. एंड देयर आर 2 blank pages that can be used at the end of the question paper booklet that can be used for rough work, right? So the subjective questions are written in the question paper booklet. Question paper is taken away by the invigilator after the exam ends, and जो सीनियर फैकल्टी होती है स्कूल की, दे चेक द पेपर मैनुअली. सो सब्जेक्टिव में व्हाट यू डू, यू गेट मार्क्स अकॉर्डिंगली फॉर इट. देयर आर 2 इन्विजिलेटर्स इन ईच रूम. 2 टीचर्स होते हैं जब आप एग्जाम दे रहे होते हो. रोल नंबर, क्लास रोल नंबर के हिसाब से सीट इन बेस होती है. ऑब्वियसली सिंस एग्जाम स्ट्रीम बेस्ड है, ऐसा लग सकता है कि सारे पीसीएम वाले बच्चे एक रूम में बैठे हैं, पर ऐसा नहीं होता है. यू सिट सेक्शन वाइज, एंड इवन इफ योर पर्सन हु हैज द roll number in front of you is taken some other stream, आप still आधे पीछे बैठो दे. And then very well way that in which the examination is conducted. Exam से एक दिन पहले छुट्टी हो जाती है, जिससे you have adequate time for revising anything you want to do for the exam, and it is conducted very smoothly. Paper time पे आता है, there are no problems in how the paper is structured, there are no printed mistakes. मेरे पेपर में तो दोनों पेपर में एक भी printed mistake नहीं थी. पेपर इज ऑन टाइम, टीचर्स आर हेल्पफुल. ओएमआर गलत भर जाती है, मेरी खुद की दूसरी ओएमआर गलत भर दी थी सेकेंड अटेम्प्ट में. सो दैट वेंट बैड, बट द टीचर्स क्विकली सॉर्टेड इट आउट. मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी. आई वॉज फुल्ली फोकस्ड ऑन माई पेपर, एंड the teachers sorted it out for me. They got me a new OMR, they got it replaced. Don't worry about that. So both papers are shown to you that you are making no errors. The school made no errors in checking the paper. Paper the objective part is checked with the OMR reader, so क्रॉस करना अवॉइड करो. कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन हो रहा है, OMR नहीं मिलती है, बट गलती से कोई डिटेल मिसप्लेस हो गई, कोई डिटेल गलत भर दी, उस पर teachers are lenient, they provide you extra OMR, so don't worry about that, but carefully भरना because it ruins the state of mind. So पहले एग्जाम conducted first week of September, second exam is in the second week of October. Final scholarships are declared by the end of October. Seminar hall में सारे बच्चों को बुलाते हैं. Verma sir himself announces the scholarships whoever has won. पूरी रैंक लिस्ट वहीं अनाउंस होती है इन ऑर्डर. जिसको स्कॉलरशिप सबसे ज्यादा मिली, जिसको कम मिली, सब तो स्टेज पर बुलाते हैं, स्कॉलरशिप प्रेजेंट की जाती है. जो जनरल स्टोर सब आते हैं जनवरी तक बहुत सारे री अटेम्प्ट होते रहते हैं इवन आफ्टर दीज मेन 2 अटेम्प्ट्स. बट स्कॉलरशिप जो लोग एक्चुअल में दो स्कॉलरशिप ट्राई कर रहे हैं एम करने के लिए, दे हैव टू मेनली क्लियर इट बाय द सेकेंड पेपर. जो इसके बाद री अटेम्प्ट्स होते हैं, दे आर मेनली फॉर दोज बच्चे हु आर नॉट एबल टू गेट द स्ट्रीम दैट दे वांट. अगर किसी बच्चों तो सिर्फ स्कूल कॉमर्स ऑफर कर रहा है एंड दे वांट टू टेक मेडिकल, सो वो मेडिकल का पेपर तीसरी बार भी दे सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द स्ट्रीम. एटलीस्ट स्ट्रीम मिल जाए. स्ट्रीम सिलेक्शन पेपर भी बोलते हैं सर. सो यू आर allocated your stream for 11th and 12th only on the basis of merit of this exam. बोर्ड्स के बाद भी होते रहते हैं टेस्ट. सो समटाइम्स बोर्ड्स में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद या बोर्ड्स के बाद फ्री टाइम के बाद भी स्ट्रीम मिल जाती है, बट स्कॉलरशिप जनरली यहाँ पे लिमिट हो जाती है. भारतीय एक्सटर्नल बच्चों का भी यही एग्जाम होता है. दे ऑल्सो गिव इट ऑलमोस्ट इन द सेम टाइम फ्रेम, सेप्टेम्बर अक्टूबर, बट उनकी मार्जिन, उनकी स्कॉलरशिप अवॉर्ड सब डिफरेंट होती है. Students who miss both the exams have to compulsory give the retest after the scholarship announcement. Scholarship categories मैंने already बता दी है, but 1000 ship, 2000 ship, 3000 ship, 100% scholarship, and then different percentages when you come down. These are my scorecards from the 2 papers I gave.
बेस्ट ऑफ टू लगता है. सो आउट ऑफ बोथ द स्टोर्स दैट यू गेट इन द रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस, उन दोनों का जो भी बेस्ट स्कोर होगा इट विल बी रिफ्लेक्टेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ योर स्कॉलरशिप. मेरे फर्स्ट पेपर में 150 मार्क्स आए थे, दूसरे पेपर में 177.5 आए थे. एंड वेरी प्राउडली आई कैन से दैट मेरे सेकंड पेपर में फिजिक्स में कंप्लीट 65. वेरी प्राउडली आई कैन से दैट मेरे सेकंड पेपर में एग्जैक्ट 100, सॉरी 65 marks आए थे फिजिक्स में. वेरी प्राउड ऑफ इट एंड आई गॉट 177.5 overall. A very respectable score. I mean, I could have gotten more than this also. Paper was very doable, but again, in the flow of time, हो जाता है time up down. So थोड़ी सी गलतियां रही थी एंड दैट बेसिकली गॉट माई स्कोर अ लिटिल डाउन, बट स्टिल आई वॉज इन बोथ द पेपर्स आई वॉज रैंक फर्स्ट इन माई क्लास and that got me the 1000 scholarship award. So if anyone wants to see the breakdown I had for my maths difficulty का थोड़ा idea लेना, here you go. Following this we are to syllabus and difficulty. Physics, motion, kinematics, force, NLM, gravitation, flotation, both power, energy, sound, light, human eye, electricity. 9th chapters followed by 10th chapters. Difficulty weightage मैंने mention कर दिया. Again, this is from the perspective of मैंने जो एग्जाम दिया. हो सकता है आपके एग्जाम में सेम टॉपिक्स आए ही ना, हो सकता है वेटेज ऑल्टर हो जाए, तो हर साल पेपर नया बनता है. हर साल टीचर्स जो पेपर बना रहे हैं वो भी शायद अलग होते हैं. वी नेवर नो हाउ द पेपर इज बिल्ड. सो पढ़ना सब कुछ है एंड डोंट रिलाई ऑन डिफिकल्टी. तो ये सीनियर बोल रहा है कि ये वाला टॉपिक ज्यादा आता है, चैप्टर ज्यादा वेटेज रखता है. ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं है. हमें भी बहुत एडवाइस आई थी हमारे सीनियर से, ये वाला चैप्टर कर लो. टर्न्स आउट उस चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं आया. सो not necessary that you only do the main difficult or high weighted topics, because you never know what comes in the exam. Chemistry also 9-10 syllabus, maths also 9-10 syllabus. Almost nothing is different syllabus में, but difficulty again पुश हो जाती है. 11th के स्टार्टिंग पोर्शंस तक पुश हो जाती है. नॉट एडवांस क्लैरिटी आप तो चाहिए हो, एडवांस तक का सोच पा रहे हो इस क्वेश्चन करने के लिए. सिंपल क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूला एप्लीकेशंस, बट इवन इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला यू नो द कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन हो ही जाते हैं. Even if you are not currently prepared to solve any 11th question, as long as your 9th the fundamentals are clear, you are comfortable with what you have studied, you won't really face a problem in attempting all of this. Some topics हैं मूल concept especially जो I have written here, which has now been removed from 9th का formal syllabus. at least मैंने जो 9th करी है उसमें नहीं था, अब तो 9th से ज़्यादा तो मेरी रिवाइज हो रही है. बट मूल कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट. मूल कंसेप्ट पे बहुत पेपर आते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स पे भी बहुत पेपर आते हैं. सो एडिक्वेटली प्रिपेयर कर लेना, स्पेशली ये टॉपिक्स. जो स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा क्लास में हैं, जो जूनियर्स एक्स्ट्रा क्लास में हैं, भाई मॉड्यूल्स लग जाओ. मॉड्यूल्स लाइन के बाद लाइन करते जाओ एंड कंप्लीट द एंटायर मटीरियल. ये मटीरियल तो अटमोस्ट कर ही लो, because most students who got scholarship in the exam that I gave last year were from scholar section only. That too मेरा वाला section, that was the 10th F, so highest scholar था. Most students that were awarded scholarship were from my section only, but there were some students normal class से भी बच्चे थे जिन्होंने scholarship मिली थी, दूसरे scholar section से भी बच्चे थे, but mainly scholarship मतलब इस scholar section से बच्चे थे. And fundamentally what that tells you, the material they are teaching in extra class is exactly in line with what they are planning to ask in the exam. एक्स्ट्रा क्लास में जो टीचर्स बोल रहे हैं, जो एडवाइस बोल रहे हैं, उन्हें भगवान की तरह ट्रीट करो. लिसन केयरफुली टू एवरीथिंग द टीचर टेल्स यू. फोकस ऑन द मटीरियल दैट दे आर टीचिंग एंड अपनी तरफ से वॉट एवर यू आर प्रोवाइडेड इन एक्स्ट्रा क्लास कंप्लीट करो. क्लास में भी होमवर्क मिल रहा है, कंप्लीट करो. इफ यू आर दैट इन एनी असाइनमेंट और मॉड्यूल, कंप्लीट कर लो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बाद में जाते व्हेन यू सी द पेपर तुम्हें खुद यही अंदर से रियलाइज होगा दैट दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग जो सर ने बोला था इस समय थी, इस दिन थी, ये पढ़ते रख लो. सो दैट्स ऑसम. सो सिलेबस कर लेना. I'll follow that with reference books and sources. Once again, study from the material, study from the textbook that you understand. तुम्हें जिस बुक से समझ आ रहा है, तुम्हें जिस मॉड्यूल से समझ आ रहा है, कंप्लीट कर लो, नो प्रॉब्लम. जब as long as you are able to understand the concept, you are understanding क्या चल रहा है चैप्टर में, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, how to do questions, and practice sufficient है, you are sorted. You don't need to listen to the entire thing I'm going to tell you about reference books. This is what I followed. It is possible that you don't match it entirely. कुछ भी काम ना करे इससे.
because you are you. You never know what works for you, right? You have to experiment and find out. Don't be hesitant to try out books. Library is awesome. Try to go to the library, see if you can find a new book. Try to see and समझ आ रहा है उस बुक से आ रहा है तो कंटिन्यू फॉरवर्ड करो डू मटेरियल डू एज मच एज यू कैन because you are preparing with the mentality that the friend sitting next to you might be preparing more than what you are preparing and your competition is directly with your batchmates at least इस paper they respect में work together साथ में पढ़ो what you have to do but at the end you will be on your own so prepare with the mindset that you have to prepare the most even if you don't score the most you have to prepare the most because you have to put the best that you can put towards it so physics, I'll go very fast through it. Foundation Those by Vitas Jain. About 1 week into extra class of 10th, we got recommended this book. The book is very good. I have done almost half of the book in my grade 10. Why half? Why not full? Because थोड़े से chapters not coming in examination and थोड़े से chapters पे clarity तो ज़्यादा ही थी. So उनको recover करनी थी जदे. The topics I did from Foundation Those by Vitas Jain, Arihant Publications. Awesome. Time methods and इलम पुली दा वरुस होता है. Combine that with extra class module, there is nothing that you are necessary to do. SOF workbooks thi and there were grade 9, grade 10 modules, UT assignments. Assignments normal class they be are very helpful. They prefer them, try to like understand हर question assignment. अभी तो हो सकता है उसके concept पे ही पूछ लें. Kinematics, I would recommend अपनी side से HC Verma of grade 11 concepts of physics एक बार कर लो. Tough लगेगा, it is tough for many people. बट एक बार कर लो दे यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एक्स्ट्रा क्लास में जो बच्चे हैं दे आर प्रिटी मच वेल अवेयर थी एचसीवर में व्हाट लेवल रहती है सो दे आर डूइंग दैट if you are trying to compete with them at least एक बार go through कर लो so kinematics is enough NLMB not required kinematics HCver में only selected questions so question नहीं हो रहा it is okay move on to the next one because you are not preparing the entire syllabus you are preparing as much as you can with respect to the specific exam time limited है what you are doing is limited you are also limiting yourself due to board का पढ़ना so it's okay जितना हो पा रहे कंप्लीट कर लो इस रिस्पेक्टिव मटेरियल से ऑप्टिक्स लिटरेसी अच्छे क्लास में पढ़ लेना देयर इज नो नीड टू बी डन ऑप्टिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अच्छे से लर्न करो ट्राई टू रीराइट फॉर्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद होंगे एग्जाम में टाइम बचेगा ऑब्वियसली सो दैट हेल्प्स केमिस्ट्री टफेस्ट एग्जाम मतलब टफेस्ट सब्जेक्ट लग रहा था तीनों में से बहुत शायद ठीक है मोल कंसेप्ट पूछा था मोल कंसेप्ट डॉट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर जो रिक्वायर करते हैं एक्सटर्नल एफर्ट क्लास में इतना नहीं पढ़ाया जाता है एक्चुअल क्लास में तो खबर हो दिया था वी आर टॉट मोल कंसेप्ट इन ग्रेड 8 एंड ग्रेड 9 में भी वापस होता है ग्रेड 10 में भी वापस होता है मोल कंसेप्ट सो मोल कंसेप्ट एंड डॉट्स तो तब भी हो जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर थे सम टॉपिक्स दैट कम इन द एग्जाम आर काफी हाई लेवल बिकॉज एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा तो 9th एंड 10th में दोनों बार हुआ है बट lot of my junior batches have not done it so self effort करो NMSC से complete कर लो if you are able to do it extra last modules complete करना are must for mole and dots good enough molality wavelength radius orbit direct formula based questions मतलब अगर formula भी याद होता तो subjective थे almost सारे क्वेश्चन हो पा रहे थे so yeah basic reading करते जाना NCERT से लाइन से 9-10 स्पेशली कुछ भी आ सकता है ट्राई टू रीड एवरीथिंग मेरे पेपर में तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला आया था वेरी इजी क्वेश्चन इन नाउ रेट्रोस्पेक्ट बट मेरा गलत हुआ था बिकॉज आई डिड नॉट रीड एनसीईआरटी प्रॉपर्ली एसिड बेसिस में दिया हुआ है एक टेबल जिसमें सारे फॉर्मूले दिए हुए थे उससे बट आई डिड नॉट रीड दैट सो दैट मिस हो गया सो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट अगेन सो डोंट डू ओनली हाई लेवल बुक्स ट्राई टू कवर एनसीईआरटी ऑल्सो एट लीस्ट ग्रेड 9 एंड 10 थी मैथमेटिक्स प्रशांत जयंती बताती है फॉर PRMO very good for foundational maths is okay I mean if you're doing RD Sharma also and you are pretty done RD Sharma is sufficient for mathematics and extra class modules enough जो आर्यभट्ट में थे 8th में they are already well versed in almost everything that will come in the paper little bit of logarithm and a little bit of high level trigonometry पढ़ लेना because वो आर्यभट्ट में आती नहीं है so you're not well versed in that but आर्यभट्ट थे level थे compared एंट्रेंस थी
पेपर की डिफिकल्टी एटलीस्ट मैथ्स में ऑलमोस्ट सिमिलर. You don't have to worry about maths at all. So maths is pretty done. There are some more facts I think written here. I will also attach this PDF in the description so you can read it for yourself, or you can read it just right now in front of my screen by pausing the video. I have tried to cover anything जो मुझे याद आया था उस समय. This was written a while back. This was written when I gave my exam, when our scholarship was announced. So this is fresh information that I had just after the paper, not based on memory. So you then refer to it definitely. I have written a bit more things that you can see, read, understand for your respective attempt. But आधे जाते जो इस बार पेपर में आए, you never know. So read this once if you are trying to get a good scholarship surely. Important tips for Surya. In the last part of this video I will just cover this and end the video. I do not want to stretch it far enough. ऑलरेडी बहुत ज्यादा बोल चुका हूँ, 20 मिनट से ज्यादा होने वाले हैं. सो पेपर अच्छे से पढ़ो, रीड इट थॉरली बिफोर यू स्टार्ट. जिस भी पार्ट में यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट इन, स्टार्ट वहीं से. इट्स ओके इफ यू आर नॉट रियली मतलब एबल टू कंप्लीट द एंटायर पेपर. मेरा भी कंप्लीट नहीं हो पाया था, बट यू आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट व्हाट यू नो. जो आता है वही कंप्लीट कर लो, ठीक है. जो भी अंडरस्टैंड हो रहा है, ये वाला पार्ट मैं पढ़ते आया हूँ दिस पेपर में, ये वाला पार्ट लुक्स इजी, दिस इज सिमिलर टू व्हाट आई हैव स्टडीड, अटेम्प्ट दैट सेक्शन ओनली. लॉट ऑफ माय बैचमेट्स डिड सिली मिस्टेक्स. मैंने खुद इतनी मिस्टेक्स करी. मैं अपनी मिस्टेक्स अवॉइड करता हूँ. मेरे 177.5 से अबाउट 190 तक जंप हो रहे थे नाट्स. सो silly mistakes are evident, they are going to happen, and you have to make sure you don't do it. And carefully exam attempt karna, do calculations properly, check your calculations when you have done them, and that will be sufficient enough. मतलब silly mistakes तो होनी ही है. It is the entire state of mind that you are attempting the exam in that determines silly mistake हो रही है नहीं. So fresh mind से देना paper, have a clear mind, have clear thought on that day, do not have anything cluttered up brain में. अटेम्प्ट करोगे, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने की कोशिश करोगे, अवॉइड हो जाएंगी. सम आर बाउंड टू अदर, सो नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. एवरीवन इज कमिटेड दोस मिस्टेक्स. एक्स्ट्रा क्लास में मेंटेन फुल अटेंडेंस. आई हॉनेस्टली मिस्ड वेरी फ्यू एक्स्ट्रा क्लासेस. मैं 10th में बहुत कंसिस्टेंटली एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करता था. इफ यू आर इन ग्रेड 10, इवन द टाइम जब एंट्रेंस आने वाला है, वो स्पेशली एंट्रेंस थी, प्रिपरेशन थे, क्लासेस कराएंगी. लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स जस्ट डिडंट डू इट. दे डिड नॉट वांट टू स्टडी फॉर द पेपर. भाई कर लो. Even if you do the classes, even if you study what is being taught, you will be able to get a scholarship very easily because the level of the class is that much. So try to complete it as much as you can. Attendance in extra classes must, and सिर्फ रहते फायदा नहीं है. Obviously you have to interact in class, you have to pay attention on what is happening. So the teachers are excellent. The extra class teachers are genuinely the best people I have ever met. They taught so much and amplified my level last year to from this to this, that got me where I am, at least in my current state of 11th as well. So बहुत टीचर बता भी देते हैं, इस एंगल से पेपर में पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन तो एग्जैक्टली पूछ सकते हैं, जो पूछ ली भी आ जाता है. दैट्स ट्रू. एंड वही टीचर्स में भी पेपर बना रही हो, सो यू नेवर नो, राइट? सो लिसन टू देम एज इफ दे आर गॉड्स. द एडवाइस दे आर गिविंग यू as brutally honest from their side. They are trying to help you in every way they can, so they think only the best for you. टाइम प्रॉपरली मैनेज करना, टाइम बचा लेना. वो एम आर मार्क करने के लिए बाद में प्रॉब्लम ना हो. मैं वो एम बाद में मार्क करता हूँ. लॉट ऑफ माई बैचमेट्स मारते साथ साथ. आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, बट मेरी तरफ से ओ एम आर लास्ट में भरनी चाहिए. एंड जैसे यू फील इज मोर बेटर फॉर यू, यू कैन फिल इट दैट वे. बट इफ यू आर फिलिंग ओ एम आर एट लास्ट, मेक श्योर यू हैव टाइम सफिशिएंटली लेफ्ट फॉर इट, बिकॉज एरर ओ एम आर में इज गोइंग टू गेट योर मार्क्स डाउन. अदर ऊपर नीचे क्वेश्चन होते बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, वेरी इनबिल्ट टेंडेंसी थी. हमने तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ रखा है और हम सोचते हैं वही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आ दिया, एक दो वर्ड्स फ्लिप करते हैं, आंसर मिस हो जाता है. The avitation question asked in field to a dist, asked me find a field due to sphere. Very small mistake. वो diagram में it looked similar, but it was something else, so marks lose हो रहे हैं. Maximum number of questions attempt करना. This is a competitive examination. The narrative margin is way too less. It is not that harsh. So अगर एक भी option कम हो पा रहा है, that is good enough to be attempted. At least attempt कर लो. It might feel scary, what you are doing this, don't rate your marks down, but again, the reward is so high for very less narrative marking. It is in the long run more beneficial. Yeah, attempt. If I show you my reference card, my negative was only what, minus
8 in the first paper and -2 in the second paper. So negative हुई नहीं, and I am pretty sure whether I was not marking the questions I was not confident in, मेरा score इतना high bump नहीं होता. So I would be stuck in the 168 lines instead of 177.5. So ये 10 marks का jump इसलिए हुआ because I was open to take the risk इस regard में. And you are also. Other you are even partially sure that you are pretty confident ये है. रैंडम देश मत करना, रैंडम देश से मार्क्स ही जाते हैं. बट इफ यूर थोड़ा सा आइडिया आ रहा है, यू आर एबल टू फाइंड इट थ्रू सम कैलकुलेशन, थॉट बन रहा है कि यहाँ पे ये हो जाएगा इवेंचुअली, मत कर दो आंसर. एंड मोस्ट टाइम्स मतलब पेपर घुमाते नहीं पूछ रहे हैं. what they are asking is already way too advanced for a lot of people living the paper ना. So उसमें कॉन्सेप्ट घुमाना इज नॉट हैपनिंग इस पेपर में, एटलीस्ट नहीं हो रहा है. आते जाते होगा व्हेन यू आर इन 11th 12th, वो fact they will try to twist that fact, but that does not appear here. Don't overthink. They are making this paper uniform for everyone, so you absolutely don't have to overthink. If you are getting the answer, that is the answer. Move with that mentality and you will have a very clear mind throughout the entire examination. Lastly, बहुत सारे बैचमेट्स पे प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़े हैं. जेन्युइनली क्यों पढ़े हैं? दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू. सम ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी थी 50 नंबर का पेपर रिपीट हुआ था, फिर भी नंबर नहीं आए उनके. सो डज नॉट रियली मेक अ डिफरेंस. सो पेपर है, देख लो, पैटर्न समझ लो, ट्राई कर लो अटेम्प्ट करते, बट सिर्फ उस पर रिलाई करना इज नॉट सफिशिएंट. मतलब एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग कंपेयर टू एनीवन हु हैज द पेपर, बहुत बड़ा डिफरेंस है. जो प्रिपेयर कर रहा है उसका ही अल्टीमेटली रिजल्ट आना है. सिर्फ पेपर देते जाने में कुछ फायदा नहीं होता. मे बी वो वाले पेपर से एक भी आइडिया भी मैच ना करे क्वेश्चन में, सो क्वेश्चन पेपर में. सो if you have it, that's good for you. If you're able to get it, that's even better. Read कर लेना what you, and that you can get an idea. Paper normally होता है, it is just like the UT exams that are conducted. तो special नहीं होता, it is just a fancy सा worded, fancy सा formatted paper, and that will ultimately decide a lot for you as someone who is in grade 10th. HLAs के बच्चे, they are particularly more serious. They are very, very into this preparation. So maybe I have also seen my batchmates how devoted they were from studying this in this paper. So everyone did very well. Like, this is the scholarship ranking of last year. 177.5, that is me. That was 1000 ship. The person that came second at 162 also got the 1000 ship. Then we had two, actually one 2000 ship, then three 3000 ships. I think two 3000 ships, yeah. Then about 6 to 7 people got 100%. So even till 12th rank, we had 100% scholarship being awarded. So there are a lot of scholarships. अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप तो बेसिकली टॉप 40 या टॉप 45 में आना है, कुछ ना तो स्कॉलरशिप लाने के लिए. एंड मेरिटोरियस अवार्ड चाहिए सच एज 100%. सो ट्राई टू एम फॉर टॉप 10. With that mindset, with that thought in mind, you will be preparing, you will be able to get what you have always been wanting for. I have tried to tell you all that I can. Mock test करो, time रखो, जितना prepare कर सकते हो करो. Everyone is doing the best they can. You have to also do your best. Other you are not fulfilling the own potential you have for yourself, the own potential you have built. पढ़ाई करते up till now, you are not utilizing this opportunity very well. You don't have to perform excellently. You only have to do your best. There is nothing more than this. Prepare wherever you want to, prepare however you want to, study anything you want, but do your best. Study as much as you can for the exam if you really want to get something out of it. Because ultimately, I have seen my friends जिन्होंने मेहनत करी है, everyone got a scholarship. Everyone got awarded for at least trying. And if you are trying to get something, you will surely get it. And that is all I have to say for now. If you have any queries, feel free to reach out to me. My email is itshitsethi01@gmail.com or itshitsethi@veritasgroup.in. Both of the emails are active. You can reach out to me. If you have my WhatsApp number, you can contact me on WhatsApp. And I hope your exam this year in October and September goes very well and you do the best that you can.